So today we are going to discuss about anti-tubercular drugs, means the drugs which are used to treat tuberculosis. As we know that in India, raw milk consumption is most common. So 1/3 population of our country is infected with Mycobacterium tuberculosis. And when the opportunity for infection arises, then there occurs tuberculosis. Also, HIV cases are also increasing. Due to this, tuberculosis infection is also emerging. So, in this lecture of pharmacology, we are going to discuss about the drugs which are used as anti-tubercular agents. We have very less drugs as bacteria is having mycolic acid in the cell wall as a protectant which protect it from host immunity and many drugs. So, let's begin. Mycobacterium is our enemy here. So we have two types of drugs against tuberculosis. There are first line drugs and there are second line drugs. The first line drugs are having less side effects. And are more compatible. But when there is resistance against these first line drugs, then second line drugs are used. So firstly, we will discuss about first line drugs. These are having less side effects and are more compatible. So the trick to remember the first line drugs are RIPEs. This include rifampicin, which is a high velocity bactericidal. I means isoniazid, which is also a bactericidal drug. P means pyrazinamide, which acts in the acidic zones, which acts in the acidic environment, like inside the cells. It kills the Mycobacterium tuberculosis, and also in the inflammatory zones. It kills the Mycobacterium tuberculosis. Ethambutol, it is a bacteriostatic drug. And next is streptomycin. It is also a bactericidal drug. It is aminoglycoside. It is also a first line drug against tuberculosis. So these are the first line drugs which are commonly used against tuberculosis. RIPEs, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol and streptomycin. So move to the next slide. How the RIPE squad completely dismantles the tuberculosis bacteria. Like isoniazid and ethambutol disrupts the bacterial cell wall. And rifampicin leads to the inhibition of the bacterial replication by binding tightly to bacterial RNA polymerase. Rifampicin bind to bacterial RNA polymerase. And next is pyrazinamide, which destabilize the active metabolic transport systems inside the membrane within the acidic environments. So by these mechanisms, anti-tubercular drugs act against the Mycobacterium tuberculosis. Let's discuss about it in detail. So first is isoniazid. As I told you earlier, isoniazid disrupt the cell wall formation. So it is a stealth prodrug. Isoniazid is a prodrug. After entering into the bacterial systems, it is converted into the active drug. बैक्टीरिया के अंदर एंटर करने के बाद ये एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होता है कैट जी एंजाइम जो बैक्टीरिया के पास होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के पास जो कैट जी एंजाइम है उसकी वजह से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो है ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। यही माइकोलिक एसिड सिंथेसिस जो है एक वैक्सी प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अराउंड और इसी माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को ये ब्लॉक कर देता है। तो
इस तरह से आइसोनियाजिड जो है एक बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। इसके बाद देखिए इथम्ब्यूटोल, ये भी एक सेल वॉल डिसरप्टिंग ड्रग है। ये जो है अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिससे जो है सेल वॉल बन नहीं पाती। डी अरेबिनोज जो है इसका पोलीमराइजेशन नहीं हो पाता, डी अरेबिनोज का पोलीमराइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है माइकोबैक्टीरियम की बन नहीं पाती। सो आइसोनियाजिड और इथम्ब्यूटोल दोनों ही सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं। लाइक मेंशन्ड हियर, आउटर arabinoglycan layer is inhibited by ethambutol and inner defective mycolic acid जो बैरियर लेयर है उसको जो है डिफेक्टिव बना देता है आइसोनियाजिड ड्यू टू द इम्प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। इसके बाद बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट्स की। जो इनके साइड इफेक्ट्स हैं, आइसोनियाजिड जो है इसका पोटेंट साइड इफेक्ट है हिपैटोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कर सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर सकता है। और हिपैटोटॉक्सिसिटी जो है इसका साइड इफेक्ट है, इसलिए इसके साथ जो है पायरिडोक्सिन देना चाहिए, विटामिन B6 देना चाहिए ताकि न्यूरोपैथी को अवॉइड किया जा सके। रिफेम्पिसिन जो है इसकी वजह से हमारे जो बॉडी के एक्सक्रीशंस हैं लाइक टीयर्स, स्वेट और यूरिन जो है ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, लेकिन ये कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बाद पायरेजिनामाइड, रिफेम्पिसिन जो है बैक्टीरियल आरएनए ट्रांसफरेज को ब्लॉक करता है, तो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। यानी स्लो ग्रोइंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ रिफेम्पिसिन काम करता है, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया के खिलाफ रिफेम्पिसिन अच्छा काम करता है। अगला है पायराजिनामाइड, ये जो है गाउट करवा देता है, बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है और हिपैटोटॉक्सिसिटी करवा सकता है। अगला है इथम्ब्यूटोल, इथम्ब्यूटोल जो है वो विजुअल एक्टिविटी का लॉस करवा सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करवा सकता है या विजुअल एक्टिविटी का लॉस करवा सकता है, कलर ब्लाइंडनेस भी करवा सकता है। इथम्ब्यूटोल जो है वो कलर ब्लाइंडनेस भी करवा सकता है, इसलिए बार बार चेक करते रहना चाहिए पेशेंट को। सो नेक्स्ट इज इथम्ब्यूटोल एंड विजन। तो इथम्ब्यूटोल जो है वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी करवा सकता है, मैंने आपको बताया। इथम्ब्यूटोल जो है ब्लॉक कर रहा था किसको, सेल वॉल फॉर्मेशन को। डी अरेबिनोज जो है उसके पोलिमराइजेशन को रोक के। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स की। ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं और प्राइमरी चॉइसेज नहीं होते ये ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, बट इफ रेजिस्टेंस इज डेवलप अगेंस्ट द फर्स्ट लाइन ड्रग्स देन वी मूव टू सेकेंड लाइन ड्रग्स लाइक फ्लोरोक्विनोलोन्स, लिवोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन। ये डीएनए गायरेज इनहिबिशन करवाते हैं। कुछ इंजेक्टेबल एजेंट्स होते हैं अमिक्कासिन, कैप्रोमाइसिन, ये जो राइबोसोमल जो है बाइंडिंग करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। फिर कुछ नए जो ड्रग्स आए हैं वो बीटा क्विलिन है और डेलामेनिड है, जो माइकोबैक्टीरियल एटीपी सिंथेज को ब्लॉक करते हैं। These are newer drugs and used in the multi-drug resistant tuberculosis. So, in humans, DOT therapy strategy is used to treat the tuberculosis. Very long course of treatment is given. Earlier, its duration was 6 months. Now it is reduced to 3 months for tuberculosis. It is directly observed treatment short course. Means which drugs are having effectiveness, we are using them, and not a single drug is used. We are using multiple drugs in the DOT therapy. 2-3 drugs for tuberculosis to treat the DOT therapy. So DOT therapy is for tuberculosis. It means directly observed treatment short course. It is provided free by the Indian government. So next is, there are resistant tuberculosis also. First is MDR-TB, multi-drug resistant tuberculosis.
that mycobacterium which is resistant against isoniazid and rifampicin concurrently is called as multi-drug resistant tuberculosis. In HIV conditions, these are the major problem to tackle the resistance. Next is XDR-TB, extensively drug resistant tuberculosis. These are the tuberculosis which are resistant to normal first line drugs as well as any fluoroquinolone as well as any group A agent. Like I told you about the new drugs like beta quinine and linezolid is also effective against the tuberculosis. Extensively drug resistant tuberculosis is not so much common. It is our luck here in India. So next, why resistance spreads? Some people skip the medication cycles. Due to this, there is low drug concentration in their body and there is development of resistance. Sometimes doctor prescribe the monotherapy, like treating the tuberculosis with a single drug. It may also lead to the resistance. Next is sometimes the overgrowth of mutated strains occurs, which are having the mutations due to which they are resistant against the normal drugs. So these were the cases due to resistance spreads. Mycobacterium tuberculosis is a notorious pathogen and we are facing many problems. So boiled milk should be taken to avoid it in countries like India. Hygiene should be maintained and immunity should be kept stronger. So this was all about anti-tubercular drugs. Thank you for this lecture.